Hello, students. Good morning to all of you. Yes, good morning. Okay, beta. Students, have you? Yes, good morning. Good morning. Good morning to all of you. Uh, Good morning. Please write your name, Vivo V3. Write down your name on the place of your phone name. Vivo V3. This person, please write your name on the. Yes. Okay. Students, I hope you have seen those videos, that those pronoun videos. Have you seen them? Okay, okay. Was there any problem? Anything you want me to explain again? Okay, and I told you to solve that your exercise of your book also. Have you done that? Okay, beta. Yes. Yeah, yeah. That's topic I just picked today. That topic I will explain. Okay, today. Up to possessive relative pronoun, that is clear. I will today explain to you the reflexive and inflexive. Okay, so okay beta, let's start our today's session. And now please be careful with your mic. Be careful. Whose mic is this? This person is not showing to me right now. Hmm. Okay, students, today we will learn about two types of pronoun. Today we will learn about two types of pronoun. Students, uh, it is in your book, your PDF. I have shared that PDF with you in your class, I think. Just wait, please. You have your books with you? Tell me. All Okay, all of you have your books with you right now. Okay, that's good. Let's come to the last type. Last type, which is given to you. It's in your book. Reflexive and emphatic pronoun. Reflexive. Have you opened that? Okay, those who haven't have the book, don't worry. I will send the PDF of book. Okay, okay. Then you have opened it now? Yes. Those who don't have book, don't worry. I will be sending the PDF to you. Okay. Right now you can come to the phone screen. I am sharing my phone screen right now. Please come to that area. Today we will study about two types of pronouns, reflexive and intensive. Reflexive and intensive. In your book, what is given there? Reflexive and empathetic. Yes. Reflexive and empathetic. ओके स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव जो इम्पैथेटिक की जगह पे एम्पैथिक की जगह पे इंटेंसिव जो वर्ड है वो भी हम यूज कर सकते हैं. इनका सेम ही है, मीनिंग इज सेम. सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट रिफ्लेक्सिव. लेट्स read the definition here, students. One thing is common
between reflexive and intensive pronoun. One thing is common कि इनमें myself, ourself, yourself, themselves, ये दोनों में ही वर्ड्स यूज होते हैं. ये सेम वर्ड्स दोनों में यूज होते हैं, बट इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि अगर हम रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ यूज कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है और वो क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में की कैटेगरी में रखा गया है उसको. सो फर्स्ट वी विल रीड दिस डेफिनेशन. Reflexive, yes, from your book or from my phone screen? Okay, you can speak. Okay, okay, very good, very good. Vihan, you were saying something? Okay, is it okay? ठीक है, ठीक है. So, definition is given to you. Right now in front of me, a definition is given here. Let me read this definition also. Uh, Reflexive ends in self or selves and indicates that someone or something performs an action to, for, or upon itself, that the subject perform and receive the action. The definition which I just read, and the definition which Samriddhi read is the same. There is the same meaning between them. What is the meaning, students? In reflexive sentence, when subject and object is same. Okay, subject, you know, the doer of the action, you know it ना. Subject क्या होता है कि जो action करता है. तो जो action करता है, या जो एक्शन, जैसे सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? डू यू हैव एनी आइडिया? नॉर्मली अगर हम सेंटेंस, यस, yes, very good, very good. So the normal sentence structure is saying to us that कि जो सब्जेक्ट है उसका जो इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में पड़ेगा, ठीक है. बट दिस रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव इज सेइंग अस दैट कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है. फर्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज सेम. सेकंड पॉइंट कि सब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो कर रहा है उसका इफेक्ट उसी पे पड़ रहा है. और ऑलराइट, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसका इफेक्ट उसी पे फिर दोबारा पड़ रहा है. लाइक यू कैन रीड दिस एग्जाम्पल हियर. Joy helped herself to some turkey. Okay. What you can anyone tell me what this sentence is saying? Can you understand this sentence? Anyone? Yes. Okay. Kindly try to please join on time, please. I request you. I know sometimes a connection problem is there, but please try next time. Okay. I was saying, I was just defining these two types of pronouns today, reflexive and emphatic. Okay, reflexive and emphatic. Emphatic को intensive pronoun भी कहते हैं. Okay, intensive pronoun भी कहते हैं. I was just explaining the reflexive. Just mark the first point. In reflexive pronoun, please put your mic on mute. Whoever's mic is this. In, yes, please. Whoever's mic is this. Okay. Please don't. So big. Nehal Agarwal, you want to share something? Nehal? Beta put.
Okay, right now I'm just looking at your name. That's why my screen is not visible. Just wait for the internet connection, and also put your mic on mute because this is disturbing others also. Okay, I hope the screen is visible again to you. Okay, just wait, just wait for few seconds. Not visible. Yeah, right now just look at is it visible now? Actually, actually there is some internet connection. Let me share my phone screen again with you. Again, I'm sharing my phone screen. Okay. Um is it now? Yeah. Oh, internet. There is some delay in the screen display. You can understand. Uh, there is some delay in the screen. Okay, first point I was saying, in reflexive pronoun, object and subject is same. It means if subject is doing any action, if subject is doing any action, it affects, इसका इफेक्ट जो है वो खुद फिर से सब्जेक्ट पे ही पड़ेगा. Subject and nobody scribble. I can see your name. I will remove you from this class. Okay? I can see whoever is scribbling on the screen. I will remove that person from the class. Okay? So don't force me to do that. So in reflexive, object and subject is same. Subject is doing a action. उसका effect जो है वो subject पे ही पड़ेगा. So you can see this. Wait, please. You can see this sentence here. Joy helped herself to some turkey. This इसमें इस सेंटेंस में क्या है कि जॉय ने खुद अपने आप टर्की ली. जैसे हम अपने आप को सर्व करते हैं. समटाइम्स वी सेल्फ सर्व आवरसेल्व्स. हम अपने आप खाना कहीं जैसे फंक्शन में जाते हैं अपने आप लेते हैं. तो इसमें क्या है कि जॉय जो सब्जेक्ट है, हेल्प्ड इज एक्शन. हेल्प्ड इज एक्शन एंड हरसेल्फ इज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. हरसेल्फ इज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि जॉय ने जो एक्शन किया उसका इफेक्ट उसी पे पड़ा. ओके, सो जॉय हेयर इज अ गर्ल. ओके, सो इन रिफ्लेक्सिव, yes, the second one. Okay, turkey, yes. Yeah, yeah, on Thanksgiving actually. Yeah, they it is a festive dish, you can say. They it is not only on a Thanksgiving or on Christmas. If there is any party, you can say they can cook turkey. Yeah, this is the dish. Yes, turkey is a bird. So yeah, this is eaten by those foreigners, you can say, on a Thanksgivings, especially on Thanksgiving. Thanksgiving, you know what is Thanksgiving? Do anyone know? Thanksgiving. Okay. Thanksgiving is a festival like here we celebrate Vaisakhi na in Punjab. So in foreign countries also in America and Britain they also celebrate Thanksgiving to thank God for the blessing of food. So let's move to our second example here. They poured some milk themselves. Okay, so you can see कि they is a subject, poured is action, and themselves is a object.
is in place of object. Yes, whoever mic is this, please stop. Mute it, please. Okay. So now let's move to intensive. In intensive, what happens? It simply adds emphasis. It simply adds emphasis to a noun. What is this? उसको बंद करो ना, उसको बंद करो तभी होना है। Actually, I just received a call from someone. That's why my net just stopped. Sorry for that. Uh, okay. I was just saying, um, I was just reading that definition of intensive pronoun. Beta, in intensive pronoun, there is emphasis. Emphasis. What happened here? Just wait, please. Please wait. Just wait, please, students. Wait for a while. Okay, I was saying, just listen to me right now. In intensive pronoun में जो subject है उसके ऊपर emphasize किया होता है. Emphasize मतलब कि उसको उसके ऊपर importance दी होती है किसी चीज के लिए. इसमें जो intensive pronoun में object जो है वो कोई और होगा. Okay, first thing is this कि in intensive pronoun herself, himself, ये जो है यूज किया जाता है सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए. एंड सेकंड पॉइंट कि उसमें ऑब्जेक्ट जो है उस सेंटेंस में कोई और होगा. एंड थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, प्लीज लिसन टू मी. अगर उस सेंटेंस में से हम वेट प्लीज, इफ वे फ्रॉम दैट सेंटेंस अगर हम वो जो हर सेल्फ है हिमसेल्फ है उसको काट दें तब भी हमें सेंटेंस की फुल समझ आएगी. ओके, लाइक यू कैन सी हियर, you can see this. Okay, you can see from this students, the mayor herself attended the carnival. I'm sharing my phone screen right now, you can come to that area. The mayor herself attended the carnival. Okay, the mayor is subject here. Okay, attended is action, the carnival is object, and जो herself है वो मेयर को एम्फसाइज कर रहा है कि मेयर ने अपने आप आकर, मतलब कि उसको किसी ने इनवाइट नहीं किया, जहाँ ये नहीं कि उस पे किसी ने प्रेशर डाला दैट यू हैव टू गो टू दैट कार्निवल, मतलब कि अपने आप उसने वो काम किया, उसने वो कार्निवल अटेंड किया. और सेकंड पॉइंट यू कैन सी ऑब्जेक्ट जो है वो कोई और है. थर्ड पॉइंट, अगर इसमें से मैं ये हर सेल्फ को कट कर दूं, आई एम you can hear my voice now, students? Okay, thank you for replying. Okay, thank you. So the mayor herself attended the carnival. From this, if I just erase this herself, अगर इस herself को मैं कट कर दूं तो सेंटेंस क्या बचेगा? प्लीज लिसन टू मी. Put your mic on mute, please. The mayor attended the carnival. Okay, just first put your mic on mute, all of you. Okay, the mayor herself attended the carnival. अगर इसमें से मैं herself को कट कर दूं, if I cut this herself from this sentence, तो sentence क्या होगा? The mayor
Wait, please. Wait. I will send you the video of this also. Okay. So you can revise from that video if somehow in between my voice is not clear. So just listen to me. The mayor herself attended the carnival. इसमें से मैं अगर herself को कट कर दूं तो सेंटेंस रह जाएगा द मेयर अटेंडेड द कार्निवल. आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड द मीनिंग. मुझे इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो रहा है. ठीक है. सो इसका मतलब कि ये जो हरसेल्फ था ये जस्ट सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए लगाया गया है. मतलब कि इसके बिना भी सेंटेंस मुझे समझ आ रहा है. अगर मैं ये हरसेल्फ ना यूज करूं तब भी मुझे सेंटेंस जो है कंप्लीट लग रहा है, समझ आ रहा है. तो इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव में अगर आपको सेंटेंस पता करना है कि हाउ टू नो कि कैसे है कैसे नहीं, तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है. आपने क्या करना है, आपने जो जैसे मान लो कहीं भी हर सेल्फ देम सेल्फ दिया हो आपको, ये जो प्रोनाउन दिए होंगे उसको आपने ओमिट करके देखना, उसको आपने कट करके देखना है. अगर आपको सेंटेंस समझ आ रहा है तो इसका मतलब इंटेंसिव है. मतलब कि जब आपने उस प्रोनाउन को कट किया तब भी आपको सेंटेंस जो है वो समझ आ रहा है, इसका मतलब वो इंटेंसिव है. और अगर आपने जैसे ये जॉय हेल्प्ड हरसेल्फ टू सम टर्की, इसमें अगर मैं हरसेल्फ को काट दूं तो सेंटेंस रहेगा जॉय हेल्प्ड टू सम टर्की. मतलब कि सेंटेंस मुझे क्लियर नहीं हो रहा. जॉय हेल्प्ड टू सम टर्की, ये क्या बात हुई, सेंटेंस समझ नहीं आ रहा, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा. ओके. ये काफी अच्छा हिंट है, ये भी अपने माइंड में रखना. और बस जो डाउट है उसको क्लियर रखना कि इन रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम. ओके. एंड इंटेंसिव में जस्ट सब्जेक्ट को एम्फसाइज, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए. जैसे सेकंड, आप इंटेंसिव की डेफिनेशन में जो सेकंड एग्जाम्पल है उसको देखो. फ्रैंक फिक्स द रेफ्रिजरेटर हिमसेल्फ, कि फ्रैंक ने खुद रेफ्रिजरेटर ठीक किया. अगर इसमें से मैं हिमसेल्फ काट दूं तो फ्रैंक फिक्स द रेफ्रिजरेटर, आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि फ्रैंक ने खुद ठीक किया. सो इंटेंसिव में जस्ट इतना है कि सब्जेक्ट को एम्फसाइज किया जाता है. वी विल नेक्स्ट सी टू द worksheet here. I will send you the worksheet. Okay, let me share with you a worksheet right now. Yes. Yeah, it is related to this topic. Yeah, you can right now see this on your phone screen. I hope. Just wait for few seconds. If it's not visible, it will take few seconds to show. Okay, thank you for replying. Okay. Now please listen to me. Listen, please. Drew showed himself in sports clothes. You can see Drew showed himself in sports clothes. First sentence is here given to you. Drew is subject, showed is action and himself. ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिर रिफ्लेक्सिव है कि इंटेंसिव है? हम हिमसेल्फ को कट करके देखते हैं. वैसे तो जिनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की समझ है वो समझ गए हैं कि ये कौन सा टाइप है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव? एनीवन? रिफ्लेक्सिव. ओके. ओके. आई yes, Nitish, why reflexive? I'm asking Nitish this question. Why reflexive, beta? Tell me. Yes, Nitish. Beta, try to answer, please. Okay. Second person, I'm a. Okay. What's your name? Okay, you can answer. Whoever this is. First, tell me your name. Okay.
Anyone else? Okay, well, try. I want to. Yes, yes, अर्नव इज सेइंग कि अगर हम हिमसेल्फ को काटें, उसको कट कर दें, ठीक है, तो हमें सेंटेंस समझ नहीं आ रहा. ड्रू शोड इन स्पोर्ट्स क्लोथ्स. ओके, तो हमें क्लियर नहीं हो रहा. सो ड्रू जो है वो सब्जेक्ट है, शोड शोड जो है वो एक्शन है. सो दिस इज रिफ्लेक्सिव. जो बेटा आपने जो पहले स्टूडेंट ने बोला था, उसने ये आंसर तो रिफ्लेक्सिव दिया है, बट डेफिनेशन वो इंटेंसिव की बोल रहा है. उसने कहा था कि हिमसेल्फ को कट कर दिया है, फिर भी सेंटेंस समझ आ रहा है. वो इंटेंसिव की डेफिनेशन है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई एम श्योर इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. गॉर्डन हिमसेल्फ वॉज इन अ baseball uniform. Gordon himself was in a baseball uniform. Yes, what's its answer? Reflexive or intensive? Okay, okay, okay. Okay, yes, Vihan, you want to tell me why this is intensive? Actually, right now I'm not talking anything. That's why my voice is not audible. Vihan, I think you just confused with what type of pronoun is this you said? Intensive or reflexive? Tell me, please. Intensive. Beta, intensive में क्या होता है? Just listen to me carefully. All of you others, if you have doubt with this. In intensive, if we will delete this, you can say cut this himself. We can still understand the meaning. Okay, we can still understand the meaning. Gordon was in a baseball uniform. Okay, so we are able to understand the meaning कि गॉर्डन ने बेसबॉल यूनिफॉर्म डाली हुई थी. और ये हिमसेल्फ जो है वो गॉर्डन को एम्फसाइज कर रहा है, मतलब कि उसके ऊपर इफ इम्पोर्टेंस दे रहा है उसको कि वो बेसबॉल यूनिफॉर्म में था. ठीक है, तो ये इंटेंसिव हो गया. आपको फिर से मैं बेटा रिपीट करती हूँ. रिफ्लेक्सिव में क्या है? इन रिफ्लेक्सिव एक छोटी सी ट्रिक है. अगर आप उसको देमसेल्फ या कुछ भी जैसे हर सेल्फ है, उसको अगर आप कट कर दो और अगर आपको सेंटेंस नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं लग रहा, ठीक है, तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव. और अगर आपने देमसेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ इनको कट करके, ठीक है, जो प्लीज वेट, इनको कट कर दिया और यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड द मीनिंग, दैट मीन दैट इज इंटेंसिव. Okay, that mean that is intensive. Now please try to solve the third one. The students taught themselves how to use oil paints. Intensive or reflexive? Now just students raise your hand, those who are saying this is intensive. Third sentence, whoever student said that this is intensive. Okay. Okay, 3 students are saying this is intensive. Now lower your hands, those students who are saying this is reflexive. Now only those students who are saying this is reflexive. Okay, Manya, can you tell me why this is reflexive? Manya? Okay, अगर themselves को कट कर दिया तो क्या सेंटेंस बचेगा? The students taught how to use oil paints.
इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स ने सिखाया, ठीक है, पर किसको सिखाया ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा। तो इसका मतलब कि ये जो themselves है ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। थर्ड वाला आंसर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ fourth, the teacher herself did a self portrait. The teacher intensive. Okay. Yes, students, I am telling you right now, I'm just recording my this session. Okay, I will send you the video. Okay, only 3 minutes are left. That's why. If you missed some part, you can rewatch that part. Okay. You want me to send that video personally, or you want me to send that video? Oh my God, this problem. Or I can share the link. Okay, on YouTube video. Okay. Okay, now to the fourth. The teacher herself did a self-portrait. Student, please check your internet connection. Others can hear me. That's mean my internet is working fine, but it may be connection from your side. You can see it's cloudy today. Okay, the fourth one is intensive. Fourth one is intensive. Fifth, she portrayed herself in an evening gown. She portrayed herself. Please put your mic on mute, Armandeep Singh. She portrayed herself in an evening gown. What type of sentence is this? Can you tell me? Okay, right. Good. Now next, you might ask yourself what you would wear in a portrait. You might ask yourself what you would wear in a portrait. Anyone can tell me? Reflexive. Good. And the last one, seventh. I myself would be in jeans and a sweatshirt. Okay. Okay. Incentive नहीं है, intensive है. Incentive is something else. Okay, student, that's all for today. I'll be sharing this worksheet PDF in your group also, so you can try it again by yourself. And you can watch this recorded session on a YouTube, okay? If you miss something in between. Okay, that's all for today. You have, yeah, I will upload this video on YouTube now on my channel, because this is a very huge video. It will be difficult for me to send it in group. Okay. Don't worry. I don't need subscription. Thank you. By the way, thank you so much. Students, okay. Have a good day. All of you. Okay, bye. Pleasure, student.